कि everybody would be happy with a girlfriend from showbiz, but they wouldn't want their sister to be that girl. Simple सी बात है. Hello and assalamu alaikum. Today on our series of Struggle for Success, we have a person who's a perfect example for like earning through the passion. मतलब ये वो इंसान है जिन्होंने अपने पैशन को, अपने शौक को अपना पेशा बनाया और एक फोटोग्राफी के फील्ड में एवोल्यूशन लेके आएंगे जो कि पहले कभी नहीं होता था, and he brought that evolution to the field of photography. And we have with us Irfan Ahson today. Assalamu alaikum sir, how are you? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आप सर बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बस मैं आपसे बल्कि ये पूछूंगी आपकी कैसा लॉकडाउन कैसा जा रहा है. आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि मतलब टाइम ही नहीं होता. तो इस सारे बिजी और हसल बसल के टाइम में जब आपको इतना सारा फ्री टाइम मिला है तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? You're absolutely आपका जो क्वेश्चन है, it's very very I would say appropriate because हमारी सोशल लाइफ फोटोग्राफर्स की बिल्कुल जीरो होती है. We call it कि social cost for our profession is very high. कि जब हमारी फैमिली एंजॉय कर रही होती है, हम दूसरों की फैमिली की एंजॉयमेंट की कवरेज कर रहे होते हैं. इस लॉकडाउन से द टेबल्स हैव टर्न्ड ऑल टुगेदर. अब पिछले 2 महीने से मैं फैमिली के साथ अपने लॉकडाउन में, और मेरी बेटी कह रही थी कि बाबा एटलीस्ट दिस वन गुड थिंग अबाउट द लॉकडाउन कि यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अस. तो मैं बस या सो आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, बट आई एम शटलिंग. अब मैं ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ सकता कहीं देर, तो कभी मैं इस्लामाबाद होता हूँ, कभी लाहौर, कभी ननकाना के पास. तो यस इट्स टफ बिकॉज जब आपको एक वेरी हाई और फास्ट पेस्ड लाइफ की आदत पड़ गई होती है, so then it's very very difficult to adjust to इस तरह की लाइफ. बट गुजारा कर रहे हैं या मर जाएं, दोनों से एक. I will slip in my question जो आप अभी ये कह रहे हैं इसी पे कि आपने कहा कि इतनी बिजी लाइफ होती है, कोई फैमिली लाइफ नहीं होती, कोई सोशल लाइफ नहीं होती, because you're always on the go and always on the move to work. तो ये सारे सिचुएशन तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमारे जो टॉपिक ऑफ आवर सीरीज इट brings to that कि ये सारी चीजें तो इतना ज्यादा स्ट्रेस आपको बना देती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाती है बंदे को, उनके उसकी अपनी पर्सनल स्पेस जो है वो बड़ी रिड्यूस्ड हो जाती है. तो how do you manage that? It's very hard to manage because you bring that stress and anxiety to home as well. It's very difficult to assume कि यार जो आपका स्ट्रेस है वो काम का जो खत्म हो गया और आप घर आ गए तो your that part is over. आपके ज़हन में हर वक्त कोई ना कोई किसी की एल्बम, किसी की वीडियो की डिलीवरी, किसी के इवेंट इवेंट पे लड़के पहुंचे हैं, टाइम से नहीं पहुंचे हैं, आउट ऑफ टाउन के इवेंट होते हैं, रास्ते में जुलूस होते हैं. तो there's so many things. ब्राइड्स का मेकअप लेट हो जाता है, कपड़े टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे होते और अगली ब्राइड वेट कर रही होती है. तो there's so many things that make you so high strung and very very stressed out. तो एंड मैं वैसे ही टाइप ए पर्सनालिटी का बंदा हूँ, एंड ये चीजें कंपाइल करके I'll give you an example. Once I went to a neurologist. I had a back issue, so I was very high strung. वो neurologist डॉक्टर नईम कसूरी मेरा ख्याल है उनका नाम. तो वो पंजाबी में कहते मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो, बट तुम्हें वो तुम्हारी कमर नहीं मारेगी, तुम्हें वो मारेगी जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारा डे जॉब है. एंड ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू. तो वो मेरी जो पर्सनालिटी या जो स्ट्रेस या नर्वसनेस थी, ही कुड ऑलरेडी फील दैट विदाउट इवन हैविंग चेक मी. तो ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. आवर किड्स सफर, मैरिटल लाइफ सफर्स बिकॉज वो ये कहते हैं कि आप जो अपनी टेंशन है वहां छोड़ के आया करें, घर ना लेके आया करें. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. देखिए 9 to 5 जॉब में you work 9 till 5 and then आप घर आ जाते हैं, फिर आपको कोई emails नहीं आ रही होती हैं, आपको कोई calls नहीं आ रही होती हैं. यहाँ पे all the time there is some SMS, WhatsApp, Insta के ऊपर कोई ना कोई inquiry या inquiry about their delivery album, कुछ ना कुछ चल रहा होता है 24 घंटे. रात को 2-2 बजे भी पहले कॉल्स आती थी. इरफान ahson स्टूडियो
और फिर रेट्स पूछना शुरू कर देते थे। मैं कहता था जी आपकी सुबह शादी है, आप मुझसे रात को 2 बजे रेट पूछ रहे हैं। तो ये चलता है जिंदगी का हिस्सा। ऐसा ही है। तो सर सिविल इंजीनियरिंग आपने की और वो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अब्रॉड, और फिर उसके बाद आपने यू स्विच्ड योर प्रोफेशन, तो ये कैसे हुआ सारा कुछ? मैं मास्टर्स करने अमेरिका गया था, तो वहाँ पे उसके बाद शादी होगी। तो आई वाज डूइंग जॉब एज अ सिविल इंजीनियर, और ये एक मेरी हॉबी थी। तो शुरू में आई वुड practice on my wife and ask her to model for me, और picture started looking good. तो फिर मेरे एक बॉस की शादी थी, दूसरी शादी थी, and he had been seeing pictures, so he said you do the coverage, I don't want to spend so much. So I did his wedding, and then he liked it, and he said you should give up engineering and start doing this. मैंने कहा are you giving me a compliment or are you insulting my engineering skills? No, I really like your pictures, you're a good engineer, but I think you have a lot of potential. तो फिर उसके बाद one step after the other चलता रहा। राइट। जब तक मैं सो अमेरिका में था, ये मैं साइड पे वीकेंड्स पे करता था, और पाकिस्तान आके मैंने फुल टाइम किया। सही। तो सर चेंजिंग अ प्रोफेशन नीड्स सो मच गट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि आप मेरी फोटोग्राफी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या मेरी इंजीनियरिंग स्किल्स को इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारे पेरेंट्स जो होते हैं दे यूजुअली एक्सपेक्ट अ चाइल्ड कि इसने ये सारी डिग्री पढ़ी है और इसने ये सारा कुछ किया है, तो ही शुड बी डूइंग गुड इन दिस फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड। तो जब हम उसको चेंज करते हैं तो obviously that needs a lot of courage to make such kind of decision. So how did you do that? It was very very difficult. देखें, having been a A grader all my life, और उस पिनिकल पे पहुंच के वहां पे डिग्री करके सारा कुछ, और उसके बाद गिविंग अप एवरीथिंग, दैट्स नॉट इजी। तो आई हैड टू कंपेयर कि अब बीइंग एन इंजीनियर, that's still part of me, I'm still an engineer, लेकिन at the end of the day you have to put bread on the table. तो जब मैं Hmm. पाकिस्तान आया तो आई रियलाइज्ड कि मैं यहाँ से ही नेस्पाक से गया था, जो विच इज द टॉप इंजीनियरिंग कंपनी, और वापस आके अगर मैं नेस्पाक में ही लग रहा हूँ तो डजंट मेक सेंस। तो आई थॉट कि आई कुड मेक मोर मनी डूइंग दिस, बिकॉज मेरे पाकिस्तान आने से पहले ही इंक्वायरीज आना शुरू हो गई थी मेरी, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड डूइंग सम होमवर्क ऑनलाइन, गूगल पेज रैंक, ताकि आने से पहले ही मेरी कोई मार्केट बनी। कुछ स्टार्ट किया प्रोफेशनली तो आपको डेफिनेटली घर से बहुत सपोर्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम एक चीज नई स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑन आवर ओन व्हेन यू हैव अ फैमिली, यू वर मैरिड एज वेल। तो वाज देयर सपोर्ट फॉर यू एट योर बैक जीरो एंड? सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से, जीरो सपोर्ट थी। तो फिर आपने ये कैसे किया? अमेरिका में मेरी बीवी सपोर्ट करती थी मुझे, बिकॉज अमेरिका में यू आर ट्रीटेड लाइक एज एन आर्टिस्ट। पाकिस्तान में आपको पता है माइंडसेट वाज वेरी डिफरेंट। फोटोग्राफी वो करता था जो और कुछ लाइफ में नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान में शी वाज नॉट इन फेवर, बल्कि शी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। माय मॉम वाज आल्सो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। शी सेड हमने मुंडा इंजीनियर बना के बाहर भेजा, वो बाहर से फोटोग्राफर बन के आ गया। ये दीज वर हर लिटरली वर्ड्स। वाइफ सेड आई मैरिड एन इंजीनियर नॉट ए फोटोग्राफर। तो मुझे हर कॉर्नर से, हर कोने से जो है ना, आई वाज हैड टू फेस। इवन डैड, ही वाज लाइक बेटा ये देख लो। तो he was a little bit more supportive, but he wasn't really too keen either. Overall I had a lot of pressure and challenges from all around. वो तो I think self belief or conviction कि you think you can make a mark, that led to this switch. तो फिर आपने इस तरह किया कि आपने फोटोग्राफी को ही चेंज कर दिया पूरा, कि मतलब एज इफ आपने कहा कि मुझे कोई ये कहे कि तुम इंजीनियरिंग से फोटोग्राफी में क्यों आ गए, आपने फोटोग्राफी का पूरा जो है वो एक पूरा स्पैन ही उसका, मतलब उसका पूरा एक डिकोर सारा कुछ, उसकी सारी एक कहते हैं कि इंडस्ट्री बदल दी, कि जो एक पुरानी सारी चीजें आती रहती थी वो ऐसे फूल में से, दिल में से बंदे निकलते थे, आपने उस सारी चीजों को चेंज करके और तो उसे उसकी एक वजह बड़े। ये जी। जी
मैं ये कह रहा था कि ये इसके पीछे रीजन ये थी ना कि when you're new तो you have to have that unique selling point, वो फैक्टर एक्स फैक्टर जिसके पीछे लोग आएंगे. If you're still another one from the crowd, so then there's nothing that separates you from anybody else. तो उसके लिए there was a lot of hard work, a lot of investment, time investment, अपने ऊपर सीखना पड़ना, नए नए lenses की रिव्यू देखना, learning new softwares. फिर उसके अलावा पहले शूट स्टूडियो में वही एक कमरे में इधर हाथ रख लिया, उधर हाथ रख लिया, इधर से फूल निकल आया. लेकिन फिर उसके बाद आपने सलोन जाना, ब्राइड के गेटिंग रेडी शॉट्स लेना, फिर ऑन लोकेशन जाके उनकी शूट करना, गर्मी में जैसे भी रश में. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल दैट. तो बट Definitely you अल्हम्दुलिल्लाह. changed the era for photography all the way. Like और उसके बाद मेरा ख्याल है आपको सबने follow किया and we got to see some good things rather than वो फूल और दिल में से और हाँ, ऐसे हाथों में से तो जब मैं because था ये तो चीजें वो बड़ी मुश्किल से ब्राइड्स कन्विंस करती थी अपने पेरेंट्स को ऑन लोकेशन डे लाइट शूट के लिए. उन्हें बहुत जिद करके, माँ बाप को समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या डे लाइट शूट, क्या ऑन लोकेशन शूट. भाई वो जाओ उधर फ्लावर स्टूडियो में जाओ और कर लो. तो ब्राइड्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी. बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अब नॉर्म ही बन गया है कि ऑन लोकेशन शूट होती है. अब तो वो बिल्कुल बिल्कुल. स्टूडियो शूट का तो कॉन्सेप्ट ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया. तो सर ये तो सारी चीजें जब हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स मतलब आपने इनिशियली उसको किस तरह इन्वेस्ट किया बिकॉज डेफिनेटली द कैमराज आर हाई प्राइस्ड एंड एवरी इक्विपमेंट दैट यू रिक्वायर फॉर फोटोग्राफी इज क्वाइट हाई प्राइस्ड. तो बीइंग अ पर्सन जिसको मतलब इस सिनेरियो में फैमिली भी कहे कि ये ना करो और ये इस तरह नहीं हो सकता या ये प्रोफेशन नहीं हो सकता. So how did you managed all that stuff? Did it on your own or what? देखिए मैं जब वहां पे था तो मेरी हॉबी थी. तो हॉबी वाज वेरी एक्सपेंसिव एज यू कैन इमेजिन. तो फिर मैंने जब ये काम शुरू किया साइड पे, तो द मेन मोटिव वाज कि मेक दैट एक्स्ट्रा मनी जो मैं वाइफ की परमिशन के बगैर इन्वेस्ट कर सकूं अपनी हॉबी में. तो Mm-hmm. उसका फायदा ये हुआ कि आई वाज मेकिंग इनफ मनी ऑन द साइड, जो मेरी पॉकेट मनी कह लें, जिससे मैं लेंसेज, फ्लैशेस, कैमरास पे मैं इन्वेस्ट कर रहा था. तो मेरे पास हाई एंड प्रो गियर था जब मैं पाकिस्तान आया. पाकिस्तान में जो फोटोग्राफी हो रही थी उसमें वो बिल्कुल लो एंड चीप किट कैमरास के साथ तब काम कर रहे थे लोग. तो having Mm-hmm. that top notch professional equipment that helped me a lot. Mm-hmm. तो तो ये इसमें फिर हमारे पास यही चीज आ जाती है कि whenever you have to be in a profession that you have passion for, तो आपको फिर ये है कि उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके ये है कि you can earn for that thing, you can make equipments for that thing. मतलब उसमें फिर ये है कि हम ये नहीं कह एग्जैक्टली सकते कि कोई हमें उसे एड करे. मैंने, हाँ जी, मैं जो इक्विपमेंट लेता था मैं उससे उसके पैसे भी पूरे कर लेता था. सो दैट वाज लाइक, इंस्टेड ऑफ डंपिंग हम्म. मनी स्ट्रेट अवे इनटू समथिंग, मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया और शौक के लिए चीज ली. बट देन आफ्टर डूइंग द शूट्स एंड एवरीथिंग मैंने वो पैसे रिकवर भी किए. तो having the right education, I mean, photography related, and having the right tools, and having the drive to succeed and prove others wrong. So ये सारी चीजें factors, and the vacuum जो wedding photography में था. So you have to be the right person at the right place at the right time. So alhamdulillah that worked out. Sir, was everything all good for you? या मतलब you have also जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि सारी चीजें आपने भी बहुत challenges face किए, तो definitely उसमें आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा most devastating या most disturbing moment of your life what would be that? और उसके अलावा ये कि अगर जिस तरह का वो अगर moment आपकी life में आया तो आपने उसको किस तरह cope up किया और how did you fought back to it? I wouldn't say, देखें, there's a saying कि if anything happens, most likely उसमें कोई बेहतरी ही होती है. तो जब मैं वापस भी आ रहा था तो मैं अमेरिका में H1B वीजा पे था, which is the work visa. तो you can get extension 4 years, 4 years, 2 दफा आप यानी कि you can stay there for 8 years. उससे पहले 1.5 साल OPT होता है, which is optional practical training. So when I was coming,
तो मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था एंड मैंने फॉर सम रीजन आई डिडंट ऑप्ट फॉर द ग्रीन कार्ड बिकॉज आई थॉट कि भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक्सपायर हो रहा था एंड आई वाज कमिंग बैक आई वाजंट टू हैप्पी। उस वक्त अमेरिका में भी फाइनेंशियल क्रंच था। पाकिस्तान में भी इट वाज आई थिंक पोस्ट मुशर्रफ एरा और समथिंग लाइक दैट, हम्म 2010 की बात है। सो थिंग्स वर नॉट रियली रोजी। तो uh, so imagine having spent 10 years of your life in America, having a degree or SARA certification, and coming back to Pakistan. It was like, a big leap of faith. But that was kind of forced leap of faith because my visa expired था. So, I wouldn't call it a crisis, but I wasn't very, I would say, happy or eager about it. लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग अमेरिका पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वो मेरी किस्मत में पैसे यहाँ लिखे हुए, नेम एंड आई मीन फेम और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म So the moral of the story is one door closes, another opens. Um, there's always light at the end of the tunnel. You just have to, search for it, seek for it. अगर मैं आके अपनी इंजीनियरिंग की जॉब पे ही फोकस रखता और आउटसाइड द बॉक्स ना सोचता, तो I wouldn't be, as successful, most likely. तो सर ये अगर हम देखें जिस तरह अभी हम यही बात कर रहे थे कि बिफोर यू केम इनटू द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो तब तक वो एक बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड और बिल्कुल लो एंड फोटोग्राफी थी। तो यू हैड अ वेरी ग्रेट चांस क्योंकि ऑब्वियसली यू वर ब्रिंगिंग अप अ good quality stuff and a new idea and a new concept to the whole idea of wedding photography. तो उस वक्त तो obviously आपने जो थ्रो किया it went to the goal क्योंकि उसकी एक वैक्यूम भी था, आपने कहा जिस तरह जाहिर है क्योंकि वो चीज़ पहले नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप लोगों को देख के, आपको आइडियलाइज करके बहुत सारे जो हैं वो यंगस्टर्स वो फॉलो करते हैं एंड दे वांट टू बी इन दिस फील्ड बिकॉज दे थिंक कि थ्रू देयर पैशन दे कैन इवन अर्न अ गुड मनी। तो जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो अब लेकिन मार्केट में देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो गया है और ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी मच फिल्ड। तो मतलब it's quite difficult to make their place now. So what would be your message to the youngsters who want to follow their passion and get into the field but they are afraid कि obviously there's too much saturation now? इस पे भी I have something to say. So जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो I contacted a famous designer through somebody to get a feel of the market. और so his reply was कि your work is good, but the market is very saturated. So I would, recommend you think twice before making the plunge, etc., etc. So the point I'm trying to make here is कि before I was coming, मुझे तब भी यही कहा गया था कि मार्केट सैचुरेटेड है। और अगर आज मुझसे कोई पूछेगा तो मैं भी उसको यही कहूंगा कि मार्केट इज सैचुरेटेड। The market will always remain saturated, but there'll always be room for people at the top. So for mediocrity, there is always saturation. But for the talented, the creative, and the hard workers, there'll always be room. You just have to find that room for yourself. So my advice to youngsters is, yes, it's a lot harder to make a mark इस वक्त market में, unless you do something out of the world काम, you do ऐसी shoots जो किसी और ने देखी ना हो, पाकिस्तान में की ना हो, which is really challenging at the moment. But if you can do or come up with some idea, so then yes, you can shine. Which लेकिन photo एक shoot और, has लेकिन been अगर yet आपने वही काम करना है जो 10 साल से कोई और लोग भी काम कर रहे हैं, वही लेंस लेके, वही चीज पार्क में खड़ी करके ब्राइड को अगर आपने वही तस्वीर उतारनी है, yes, you might be able to, make some money, but you won't be able to make a mark, and you'll always be like a copy of something else instead of, the original. So do something creative, do something original, make a splash कि मैं उन लोगों को कॉपी करना चाहूँ। सर आपका अभी तक सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग शूट आपकी लाइफ में कौन सा रहा? Say interesting shoot. I think it was Atif Aslam's
Yeah, because he is an artist, and और इमान अली दोनों I would say interesting ज़्यादा आतिफ असलम का रहा because हमने वो रॉयल पाम में किया था, and I didn't have to give direction at all to him and his wife Sarah. They knew, they kept on coming up with poses and I kept clicking. So that was the best part कि वो खुद actors और वो showbiz personalities थे, तो they make your job easy कि वो आपको shots खुद दे रहे होते हैं. जब आपका subject आपको खुद shots दे रहा हो तो फिर मजा भी आता है shoot करने. सर शोबिस की बात आई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप वो इंसान है जो कैमरे के पीछे भी रहे हैं और आपने देखा है कि कैमरे के आगे भी क्या होता है. तो you have been into the field and seeing all the things with both point of views. बहुत सारे पेरेंट्स इन चीजों को जो है वो क्या कहते हैं हाईलाइट करते हैं that they do not like trust or maybe they do not like accept the environment of the scenario. तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं. व्हाट वुड बी योर व्यू पॉइंट अबाउट इट? देखिए showbiz, yes, it's changing. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं. um, the trend is changing. Families have found, it has found more acceptance in our society and in families. लेकिन I would have to I mean क्या मैं कहूँ कि still reinforce the fact that to be in the showbiz you have to be a certain kind of person, you have to come from a certain kind of family who are very open-minded, who are very liberal, because you cannot be a really, it's very very difficult for to be a family man with good, I mean, don't get me wrong, मैं क्या यहाँ पे, what I'm trying to say is कि for an average Pakistani family is very different from a showbiz related family. I'm not saying showbiz family is better or average Pakistani family is better, but there is a divide between their values, cultures, norms, क्या चीज acceptable है, क्या चीज नहीं acceptable. So even like I do fashion, but I don't do a lot of it because अगर मुझे ज़्यादा fashion करना है, तो then I have to sit with the models, I have to party with the models, I have to spend time with them, I have to basically a different lifestyle है, which I cannot sustain considering the fact that I have my own family to take care of and spend time with. So if you're a bachelor and you want to have fun, party, उस हिसाब से ठीक है. You mix, mingle, you do shoots, and you go hang out together. But yes, I I don't want to. I don't want people throwing thrones at me. You know, he's dissing the showbiz, or he's very hardcore conservative. But yes, if you want to But join there's a showbiz, difference you have to be of point careful. of You view have to know. definitely in both. Yeah, there's a difference of viewpoints in both perspective, and definitely if you're not that much open minded and you cannot adapt things अब देखिए मैं बहुत एक easily. painful बात कहूँगा कि everybody would be happy with a girlfriend from showbiz, but they wouldn't want their sister to be that girl. Simple सी बात है. I think this तो ये explains perspective everything. हमारे यहाँ change क्यों नहीं होता? Why don't we change this perspective as in cause ये हमारे पर्सपेक्टिव यहाँ ज़िया की साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और नॉर्म्स और वैल्यूज के साथ जो उन्होंने तबाही फैलाई है. इट्स ये इरेडिकेट ये मुल्लाज मौलवीज मौलानास. इस्लाम इज वन थिंग, लेकिन ये जो ज़िया साहब ने जो कल्चर फैलाया है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम. तो ये मेरे ख्याल में हमारे कोर के अंदर बैठ चुकी है चीज. लेकिन अब It हम will ये take चीज देखें तो decades and वैसे decades before yeah we become more if I open-minded would say and if more I would accepting say of that others. yeah, if I would say that a little bit of trend is changing now, people are accepting that kind of trend more now. If we see कि जिस तरह अभी ये आजकल बड़ी famous हुई हुई है अर्तगल की series, so it has all the norms and all the things that belong to our religion and our culture.
and they are being more liked by the people. So it means कि अगर हम इस तरह की चीजें भी अपने showbiz में दिखाएं तो जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ चीज दिखाएंगे तो वो ही लोग देखेंगे या खुश होंगे उनसे. इस तरह की चीजों से भी बहुत ज्यादा आप लोग ये भी तो जो है उन्हें देखें कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो हलीमा के पीछे पड़ गई है बिकॉज दे सॉ हर अदर पिक्चर्स. तो ये हमारी सोसाइटी की बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को एक पेडेस्टल के ऊपर रखते हैं एंड वी लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि there are other things. we want to see glamour but that on the screen. हाँ जी, But not on in our homes. We बिल्कुल don't want to बिल्कुल see सही बात. glamour in our homes, but we want to see that on the screens. That's the difference Exactly. basically. Yeah. अच्छा सर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक इंस्पिरेशन जरूर होती है या कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसको वो अपना आइकन या अपनी इंस्पिरेशन मानता है. आपकी लाइफ में ऐसी आइकन या इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी कौन थी? I would say my wife definitely, helped me jab I was in the US in the initial years, and she's still one of my biggest critics. So I would say yes, she's played a major part in the journey. From a photography standpoint, I would say French photographer Henri Cartier-Bresson. He was a photojournalist. So he's been my inspiration in my photography journey. Okay, तो sir, if you had a chance in your life to do one thing differently, तो आप क्या चीज होती जो differently करते? I would have started photography sooner. I started it when I was 34, 33, 34. So I would have started it when I was 16 or 17, probably 15 साल पहले कर लेता. But then again, हर चीज का एक टाइम है, जैसे कि वक्त से पहले नहीं है, नसीब से ज्यादा नहीं है. ऐसा ही है. So what would be your words of motivations to the youngsters who follow you and who follow you like crazy? कि मतलब जाहिर है आप एक आइकन है फोटोग्राफी की फील्ड में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज है, believe in yourself. If somebody tries to put you down and make you think something is not possible, make it a mission to prove them wrong. जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा आता है, जो मुझे एटलीस्ट वो आता है, उन लोगों को गलत प्रूव करना who underestimated me. So work hard, be well prepared, do your homework, find out what the competition is doing, and then try to excel. Willpower has helped me a lot. Self-belief. So ये सारी चीजें there are a lot of photographers with a lot of talent, probably way better than me, lekin who are not known aajkal. They might be doing great work. So it is self-belief, being well prepared, doing your homework, figuring out what the technology is, how to harness its power, and not giving up. I've done a lot of hard work. Sort of talent or creativity say you cannot rise and shine. You also need to do hard work and planning. I would probably say I'm not the best. मैं कभी भी ये नहीं कहता, but I'm probably one of the most hardworking photographers out there. ये मैं अपने बारे में I would like to hear that कि I am true to my craft commitment. और अगर एक जिसे बोलते हैं कि कीड़ा किसी चीज का बन जाना, that is how I see myself, that is how my wife sees me, कि मैं एक चीज में घुस जाता हूँ. अगर मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, मैं उसमें घुस गया. So if you really want to shine, you need to be very thick skinned. लोग आपको, they'll try to put you down, you keep rising, you keep bouncing back. So my three words मैं कहूँगा कि just मेरी जिंदगी का ये है. My advice to the youngsters would be, never give in, believe in the power of your dreams, and just make ऐसा mark on this world that you leave a legacy behind. That's all. Thank you so much for your time, and it was really wonderful talking to you. You gave like all the things that came out from your heart. आपने डायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं की कि ये नहीं वो नहीं या इस तरह नहीं हो सकता. आपने बिल्कुल वो चीजें बताई जो आपके साथ गुजरी
और जो एक नॉर्मली किसी के साथ गुजर सकती हैं, और वो उनसे किस तरह निकला जाए, उनको किस तरह फेस किया जाए. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग योर टाइम एंड थैंक यू My सो मच. pleasure. My pleasure. Thank you. Ji, Allah Hafiz. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.